Very good morning, children. Today we will study about poem. So let's discuss. First, we'll do interaction part. Children, what do you understand about poem? What do you know about poem? How do you make difference between poem and prose? What is poetry or poem? Children, raise your hand. And answer this question. What is poem? Shivam? Shivam, unmute yourself. Hello. Yes. Shivam, unmute yourself. What is poem? Teacher, the poem written by the writer, who is the writer of the poem. The writer was telling us about something in this poem in short. It's called a poem. Okay, let's see. Okay, you can mute yourself. Peter? इसमें पोएम का शॉर्ट थिंग लाइक बड़े चीज को छोटी जैसे बड़े चीज को छोटी वर्ड में करके बता देना। अच्छा, मीन्स थोड़ा सा कंप्रेस करके बताना। ओके हाँ, जैसे नेचर का अगर एक्सप्लेन करना हो तो सिर्फ उसकी नेचर की जो अवेलेबिलिटी है वो सब लिख दो। ओके, ठीक है। थैंक यू पीटर। शाकिब, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. A poem is a collection of spoken or written words that express ideas or emotions in a powerfully vivid and imaginative style. Imaginative style what? Okay, ठीक है। This is whatever you said na, this is a typical answer, means you will get these answers in books on Google, but I want your... And we can also say, ma'am, it is a collection of stanza. Okay, so stanzas. Yes, ma'am. Very good, Peter. Aditya, Diksha, unmute yourself. Hello, good morning, ma'am. Good morning. Now you tell me, wait, my question is, what are the features or characteristics of poem? What do you see in poem? Ma'am, sometimes some poems are in some poems rhythms are there, sounds are similar. For that we say rhythms, and sometimes without rhythms poems are also there. Okay. And poems express to us feelings. Feelings. Think more about it. Okay, okay. Very good, Diksha. Arsalan Sheikh. Arsalan Sheikh, yes. What are the features of poem? Poem के features क्या होते हैं? Arsalan, can you hear me? Okay, Moinuddin. Yes, ma'am. हाँ, पोएम के क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चले हैं? क्या क्या होता है पोएम में? The characteristics of poetry are what? एक मिनट मैम कॉल आ रहा है।
Okay, children. So poetry क्या क्या features, characteristics क्या होते हैं? Prose and poetry में difference क्या होता है? Prose एक पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है, whereas poetry अपना stanzas में होता है. Prose में भी आपका थीम होता है, स्टोरी होता है, पोएट्री में भी होता है, बट प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है. पोएम इटसेल्फ इसका मतलब है टू मेक. ओके, पोएम मीन्स टू मेक. पोएट जो क्रिएट करता है अपना जो थॉट्स, उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट करता है. प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट हियर. प्रोज में you will have paragraphs, you will have detailed idea about the content, but in poem you will have very small, we will have small paragraphs in form of stanzas, but the idea will be very deep and different. Poem का appreciation होता है, means each person can understand, each person can make out what is given in the poem according to their perception, according to their thoughts. So we have like describes the scene, conveys thoughts, tells a story in lyrical form. What is lyrical form, children? Lyrical form means musical form. Has rhythm, rhyming lines and meter tempo. Meter tempo means beats. Beats होते हैं poem में. When you will read, when you will recite the poem, you will find कि उसका एक stress होता है words के ऊपर. So that is known as tempo. Can also be in free form. कभी कभी rhymes भी होते हैं, कभी कभी free forms में भी होते हैं. And has stanzas. These are characteristics or features of poem. Now we'll see different types of poem. अभी poems के types कितने होते हैं? There are 15 altogether, but today we will discuss few of them. So first is sonnet. Pronunciation is sonnet. Second is limerick. Limerick. Ballad. Ballad. Elegy. Elegy. Free verse. Epic. Lyric. Humorous. And idyll. Last one is idyll. So there are n number of poems, 15 altogether, we can say. And out of 15, I have written here few of them. So we will discuss each poem in detail now. First, we'll discuss sonnet. Okay. So sonnet means song, related to song. But इसके features क्या होते हैं? आप different types का poem को आप पहचानोगे कैसे? Students, you can make your running notes, simple notes आप बना सकते हैं, so that next slides में we will have discussion, तो it will be easy for you to answer. तो sonnets क्या होते हैं? Sonnets are 14 lines lyrical poem. ये एक song like poem होता है और उसमें 14 lines होते हैं. पूरे poem में you will have 14 lines. इसका थीम क्या होता है? Most of the time the theme of sonnet is love. ये love poem होता है जिसमें जो topic होता है discussion, it is related to love most of the time, but sometimes different themes भी होते हैं, but maximum you will find this theme only. Has internal rhymes. Now what is internal rhymes, children? Within the lines. Actually we have rhymes in the end. ज़्यादातर end में होता है, but here you will have internal rhymes. Now we'll see example. My mistress eyes. Okay, my mistress eyes. This sonnet was written by Shakespeare. Okay, so in this poem you will see here with the help of the title only we can make out कि किसी के eyes का description है. Mistress means woman है कोई, उसके आंखों का description है. So this is an example. This is an example of sonnet. My mistress eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. Now here description of eyes is given in a beautiful way, and this poem is having 14 lines. Okay, this is an example of sonnet. Now we'll see
Next example, limerick. Okay, limerick. These are 5 lines poem. इसमें only you will find 5 lines. और इसका थीम क्या होता है? इसका थीम होता है फनी. ओके, फनी पोएम्स होते हैं, बट यू विल हैव 5 लाइंस ओनली. और उसमें एक ही स्टैंजा होता है 5 लाइंस का, और उसका राइम स्कीम जो है A होता है. ओके, सो सिंगल स्टैंजा हैविंग राइम स्कीम एज A एंड A. थीम क्या होता है? शॉर्ट टेल और डिस्क्रिप्शन. किसी भी चीज का फनी वे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है. टेल मीन्स शॉर्ट स्टोरी और डिस्क्रिप्शन होता है. विल सी एग्जाम्पल. There was an old man on the border who lived in the utmost disorder. He danced with the cat and made tea in his hat, which vexed all the folks on the border. Okay, so here vexed means discussion. Okay, disturbance. बात करने का एक टॉपिक. So here there was an old man. This poem is about the old man who was living on the border and he lived very in a disorder way. Order नहीं था life में, no proper discipline, and he danced with cats and made tea in his hat. He was making tea in his hat. So this is an example of limerick. Here this poem is having only one stanza. एक ही stanza है and there are 5 lines. Now children, let's see about the राइम स्कीम. अभी हम लोग राइम स्कीम देखेंगे. राइम स्कीम हम लोग कहाँ देखते हैं? जो लास्ट के साउंड है उसके ऊपर. सो बॉर्डर, डिसऑर्डर. सो दिस इज वन, फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज ए, बिकॉज साउंड जो है वो सेम है. कैट एंड हैट, हियर नया साउंड आया है, सो बी एंड बी. एंड अगेन यू हैव बॉर्डर. सो हियर दिस बॉर्डर का साउंड अगेन इधर आया है. That's why it is A. So A, B, and A. These are limerick. Children, you all can make on your own also your own poem. ये आप simple है, 5 lines का poem है and easy है. You all can try. एक theme लेकर you can try to write this poem. Now ballad. What is ballad, children? Now we'll see about ballad. Is a narrative verse, either poetic or musical. Narrative means description. Okay, sometimes that description will be poetic in poetic form or sometimes it will be in musical form. Music के साथ भी कभी कभी उसका description रहेगा poem का, और sometimes only in a poetic form with some form of storytelling. और उसमें क्या होगा? एक storytelling होगा. And we'll have grouping of 4 lines. एक stanza जो है 4 lines contain करेगी. So many stanzas हो सकते हैं, but उसका क्या rule है? एक stanza में you will have 4 lines. और musical form में भी होता है, sometimes poetic form में होता है, कुछ तो story narrate करता है. Now we'll see example. This is very known poem to you children. Mary's Lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Children, अब KG के students ये जो है by heart करके रखते हैं, और इसको एक poetic, हम लोग poetic form में बोल रहे हैं, इसका musical form में भी आता है. So that's why ये वाला जो poem है, it is known as ballad. और इसमें क्या है? Describe किया गया है इसके बारे में about the lamb. First poem में, first stanza में is description of lamb, how it looks. Okay, and in the rest of the stanzas आप देखोगे एक story form में describe किया गया है कि when Mary used to go to school, how he used to follow her. Okay, he followed her to school one day, which was against the rule. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned him out, but still he lingered near and waited patiently about till Mary did appear. So here, this is a description of a lamb, okay, in a storytelling form. This is your
ballad. Elegy. Now, elegy, what is elegy? It reflects upon death or loss. This poem is your sad poem. You can say, जैसे sonnet को हम लोग कह सकते हैं, it is love type of poem, but elegy is very sad poem. Either death होगा poem में, description होगा, or some loss कुछ हो गया है. Okay. Sometimes you will also have themes of redemption or consolation. Redemption का मतलब होता है कुछ ऐसा loss कुछ हुआ है उसे protect करना है, और consolation means console करना, कोई ऐसा दुखी है सो उसको समझाना. So this is a sad kind of poem. We'll see example. I remember the night my mother was stung by a scorpion. So here the poet is describing that an incident in where his mother was stung by a scorpion. Scorpion ने mother को डंक मार दिया था. So this is a sad kind of poem because इसमें death नहीं है, but loss नहीं है, but एक kind of protection है from evil. कुछ incident ऐसा हो गया है, because of that ऐसा वहां पर sadness है. Of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice, parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room. He risked the rain again. The peasants came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. So this is your an example of elegy poem, which is given in your text. Now we'll see the next, free verse. This is most known poem to you, I think so, children. So I will request you to answer this. What is free verse? You can raise your hand and answer. What is free verse? Pooja? Yes, ma'am. Free verse means that there is no rhyming schemes. There is no rhyming scheme only. No rhyme, हाँ, rhyme schemes नहीं होते, rhyming words नहीं होते. Very good. Free से ही पता चल गया है, फ्री से ही पता चल गया है चिल्ड्रन कि वहां पर वर्स में कोई भी एक पैटर्न नहीं होगा. वर्स जो है, लाइंस जो है, उसमें कोई भी एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा. So lacks rhyme scheme and musical form. Now we'll see example. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. ये अभी मैंने 4 लाइन्स पढ़ा. I did not find any rhyming words or rhyme scheme, और कोई एक म्यूजिकल फॉर्म भी नहीं है. It's like a description. बट इसका पैटर्न जो है आप देखोगे, अरेंजमेंट जो है वो शॉर्ट है. ओके. So by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. So this is an example of free verse, where no rhyming words are there. No rhyming words, no rhyme scheme. Now we'll see the next, epic. Children, now you all tell me what is epic. Epic का example कुछ explanation. ओके, शानू मिश्रा. हेलो मैम. हाँ जी मैम. मैम एपिक्स में मतलब मैम रामायण हो सकता है, महाभारत का मैम वर्ड आ सकता है. वेरी गुड. आ सकता है नहीं, आया है ही. सो एपिक मीन्स लॉन्ग स्टोरी रहती है. एग्जाम्पल जैसे अभी शानू ने दिया, रामायण एंड महाभारत. ओके, दीज आर इंडियन एपिक्स. ओके, इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आता है. व्हाट अबाउट यूरोपियन?
आपको यूरोपियन का कोई एग्जाम्पल याद है? इन 9th स्टैंडर्ड यू हैड अ प्रोज रिलेटेड टू एपिक which was written in Europe. Shakib, Raza. Shakib, unmute yourself. Ma'am, epic is a long narrative poem. I understood. I'm asking you कि एपिक का एग्जाम्पल यूरोपियन लिटरेचर में कौन सा है? आपने 9th स्टैंडर्ड में एक स्टोरी पढ़ी थी. कोई स्टूडेंट जिसको याद हो वो स्टोरी? मोहम्मद कैफ, unmute yourself. The Fall of Troy. Kev, you're not audible, Kev. Please tell me, what did you say? The Fall of Troy. Very good. The Fall of Troy. Excellent, Kev. Well done. So, example आपको 9th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा था, The Fall of Troy. उसमें 2 एपिक्स का नाम आया था. Now you have to tell me those names. वो 2 यूरोपियन एपिक का नाम आपको बताना है. Shivam, unmute yourself. Shanu. Ma'am, Iliad and Odysseus. Very good. Iliad and Odysseus. Okay. Very good students. ये यूरोपियन आपके लिटरेचर थे जो एपिक्स में काउंट होते हैं. जैसे इंडिया में रामायण एंड महाभारत है, वैसे इलियड एंड ओडिसियस का स्टोरी था. तो हियर लेंदी एंड नैरेटिव, दीज आर लेंदी पोएम्स. पोएम्स ही रहते हैं चिल्ड्रन, बट दीज आर वेरी लेंदी. बहुत लॉन्ग नरेशन होता है जो भी उसमें स्टोरी है. और स्पेशली ये माइथोलॉजिकल होते हैं. ओके, मिथिकल स्टोरीज होती हैं. तो रामायण महाभारत जो है वो भी मिथिकल आपकी एपिक है ना. एंड रिलेटेड क्या होता है, पास्ट में किसी पर्सनालिटी ने, कैरेक्टर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, कुछ एडवेंचर. जैसे महाभारत का जो स्टोरी है डिस्टेंस पास्ट का है, एंशियंट टाइम के पहले का ही है. और उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, दी बैटल ऑफ कौरव एंड पांडव. तो वो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत उसका सोशल इफेक्ट बहुत है. दीज आर योर एपिक्स. तो ओडिसियस का जो स्टोरी था वो ओडिसी में था, ओडिसी एपिक में था, जिसमें ट्रोजन वॉर के बारे में था. 10 years तक उसने ट्रोजन का वॉर फाइट किया था, उसके बारे में. व्हाट अबाउट इलियड? इलियड जो था इट वाज अबाउट ट्रॉय. जो ट्रॉय सिटी थी एशिया माइनर में, उसका स्टोरी था. कैसे वो ट्रॉय, फॉल ऑफ ट्रॉय ही है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में वो लेसन पढ़ा था. तो इलियड मीन्स ट्रॉय. Now we'll see the next, lyric. Lyric, these poems are concerned about feelings and emotions. ये poem में you will have description of feelings and emotions. Narrated in the first person. This is very important point, children. ये poem कैसे होता है, poet खुद ही speaker रहता है. वो जो भी बोलेगा फर्स्ट पर्सन में बोलेगा, I, me, ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है. एंड हैज सॉन्ग लाइक क्वालिटी. और इसका जो पोएम के अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें सॉन्ग्स के जैसे आप फाइंड आउट करोगे, लाइंस रहेंगे, म्यूजिकल रहेंगे ना. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये लायर. लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रीक एंशिएंट टाइम पे यूज किया जाता था. आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज लायर. ओके, ये देखो स्ट्रिंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट है
जो एंशियंट ग्रीक टाइम पे यूज होते थे, तभी के पोयम में दे यूज टू प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट। इसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही इसका नाम है लिरिक, बिकॉज ये पोयम में, ये सॉन्ग्स में वो लोग ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, लायर। इंस्ट्रूमेंट का नाम है लायर और इसीलिए इसका नाम है लिरिक। नाउ एग्जाम्पल क्या है? ओ व्हाट अ जॉय इट इज। नाउ हियर फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई है, जॉय की, हैप्पीनेस की। टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, for giving me strength the way you do. So here giving me strength, the first person में बात हो रही है, the poet he himself or she herself, she talking in this poem first person में, the way you do, for lifting me up when I am feeling down and putting a smile on my face when I am wearing a frown. Thanks for being there and helping me grow. Your friendship means a lot. This I would like to know. So here feelings बताई गई है, emotions बता रहा है poet, अपनी emotions बता रहा है on about his friend, अपने friends से related जो भी उसके emotions है. So he is very happy and whenever he is sad, उसका friend उसको happy feel करा रहा है. So here वो convey कर रहा है message. Now we'll see the next example. Humorous. Humorous means funny poems. Okay, funny, comical, इसका थीम ही यही होता है. Children, limerick poem मैंने अभी बताया था. Limerick भी humorous type of poem होता है, description होता है, but उसका क्या different features क्या है? It will have only 5 lines का poem. एक stanza having 5 lines. But humorous में you will have many stanzas. Now this is one of the poems from your text. I wrote some lines once on a time in wondrous merry mood and thought as usual men would say they were exceeding good. They were so queer, so very queer, I laughed as I would die. Albeit in the general way, a sober man am I. I called my servant and he came. How kind it was of him to mind a slender man like me, he of the mighty limb. These to the printer I exclaimed, and in my humorous way, I added, as a trifling jest, there will be the devil to pay. He took the paper and I watched, and saw him peep within. At this first line he read, his face was all upon the green. Green means smile karna, broad smile. He read the next, the green grew broad and shot from ear to ear. He read the third, a chuckling noise I now began to hear. The fourth he broke into a roar. The fifth his waistband split. The sixth he burst 5 buttons off and tumbled in a fit. So this is an example of humorous kind of poem. Funny, comical in nature. Let's see. Next example. Idyll. Pronunciation is idyll. Idyll क्या होता है? It's a short poem of rural or pastoral character. विलेज से रिलेटेड ये पोएम्स होते हैं. पैस्टोरल मतलब ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जो विलेजेस में एनिमल्स पालते हैं उनका. तो यहाँ पर जो भी आपको पोएम मिलेगी इडिल में, जो भी स्टैंजा मिलेंगे, इट विल डिस्क्राइब अबाउट रूरल लाइफ और पैस्टोरल लाइफ. ओके, मे बी रिलेटेड टू एनिमल्स, हर्ड्स, ओके, हर्डर, villagers, agriculturists, and elements of landscape and picturesque. This poem, when you will read this poem, this kind of poem, आप जब पढ़ोगे, you will have a scene in your mind. वो जब भी आप poems की लाइन पढ़ोगे, एक scene imagine करोगे आप अपने mindset में, mind में, और वो scene आपको rural, जैसे greenery, herds दिखाई देंगे, animals दिखाई देंगे. So this poem has an element of landscape. जिसमें आप नेचुरल जो सीन है रूरल एरिया का, गांव का, वो आपको समझ में आएगा, इमेजिन करोगे आप. रस्टिक बैकग्राउंड, वही पैस्टोरल रहेगा. एग्जाम्पल है
In the grey summer garden, I shall find you, with daybreak and the morning hills behind you. So hills, okay, garden, summer garden के बारे में बात हो रही है. There will be rain, wet roses. Roses कैसे होंगे? बारिश में भीगे होंगे. Stir of wings, and down the wood a thrush that wakes and sings. Not from the past you will come, but from that deep, where beauty murmurs to the soul asleep. And I shall know the sense of life reborn, from dreams into the mystery of morn, where gloom and brightness meet, and standing there till that calm song is done. At last we will share the league spread, wearing symphonies that are joy in the world and peace and dawns one star. So here description of सीन है, एक सीन है जो आप बैकग्राउंड में आप इमेजिन करोगे. यू विल हैव सीन ऑफ ग्रीनरी, गार्डन, roses. Okay, so this is example of idyll. So these are the types of poems which we have discussed today. Now children, we have activity. So I'll begin with the warm-up activity from your first poem. Your first poem is Where the Mind is Without Fear. Here, match the column. You have to do match the column. Children, be ready. Here in the first column, we have humanism, patriotism, internationalism, liberalism, environmentalism. These are the terms. अभी ये terms का explanation is given in the column B. You have to match the term with the explanation. उसका meaning जो है आपको match करना है. मेहरुनिसा. Yes, teacher. Teacher, first का I think E वाला है. Read the. Can you see the slides? The slide which No is. teacher, क्योंकि मेरा नाम नीचे लिख के आ रहा है teacher. Okay, okay. So humanism, she said E वाला है. We'll read. Yes. A Teacher rationalistic. अभी दिख रहा है. Okay. A rationalistic outlook towards humans rather than a divine or supernatural one. Very good. Second. Teacher, can I? Wait. Let us finish first. We have many activities. We will do. Yes. Mehrunisa, continue. Just a minute. Teacher, C वाला. Patriotism का C वाला. Quality of being patriotic, vigorous, support for one's country. Very good. Thank you. Okay, Mehrunisa, you can mute yourself. Sneha. Yes, yes. Third one. International state or process of being international. Okay. Fourth one. Holding liberal views. Very good. Last. Environmentalism. Concern about action Correct. in protecting the environment. Very good, Sneha. You can mute yourself. Okay, children. So we have completed the first activity. Now we'll see types of poems. So here we have types which I have discussed in the previous slides. Now it's your turn to answer. Yes, so I'll read. Mute yourself, children. Shivam Pandey, mute yourself. Okay, so here first one is sonnet, limerick, ballad, elegy, free verse, epic, lyric, humorous, and idyll. Now here down, you can see the description about
the above poems. Now you have to write which poem will have which description. Okay, so we'll begin with Akash. Yes, ma'am. A long story poem, often mythical. Which type of poem is this? Epic. Very good. Rehan Sheikh. Yes, teacher. Second, a short story poem with a message. Elegy. No. I'll ask other children. Lyric. Yes, Rehan. Lyric. No, it's ballad. Okay. Ballad में description होता है with a message. Now next is a poem of 14 lines. Shivam. Will you please repeat your answer? Teacher, a poem of 14 lines. It's sonnet. Very good, Shivam. Siddhi. Yes, ma'am. Fourth one, a song-like poem. Lyric. Very good. Simran. Yes, ma'am. A poem with no uniformity of rhyme, rhythm, etc. Free verse. Very good. Firdaus. Firdaus. Yes. A poem set in picturesque, rustic background. Firdaus, unmute yourself. Yes, ma'am. मेरा question. Okay, I'll ask. Pooja. Yes, ma'am. A poem set in picturesque, rustic background. Ideal. It's not ideal. Pronunciation क्या था? Idle. Idle. Okay, ma'am. good. Simran. Yes, miss. A sad poem lamenting death of loved one. Miss algae. Algae है, ये तो साइंटिफिक वर्ड आप बोल रहे हो. Elegy, miss. Elegy. Elegy. Okay, very good. Okay, from Sahkar Nagar School. Unmute yourself. A 5-line short funny poem with rhyme scheme AA, BB, A. Ma'am, limerick. Limerick. Okay, limerick. It's limerick. Very good. And last one. Mahika. Yes, miss. A poem written just to create humor. Humorous. Very good. So these are types of poem. Okay, we have discussed. Now we'll move to our first poem, where the mind is without fear. So the title of the poem is Where the Mind is Without Fear, and it was written by Rabindranath Tagore. First, we'll have a little bit brief information about the poet. So you all must be
familiar with the face and name. He was very, very renowned poet in Indian literature. So this was his lifespan. He was author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He was the author of Gitanjali. Gitanjali क्या है? Collection of poems है. इनके बहुत सारे poems को collect किया गया है. इन्होंने लिखा है जो poems, उसको नाम दिया गया है गीतांजलि. एंड ये पोयम गीतांजलि के लिए ही इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था इन 1913. ये पोयम इन्होंने फर्स्ट टाइम जब लिखा था, इट वाज इन बंगाली. ओके, बंगाली लैंग्वेज में था. लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया. और उसके बाद जब ऑल ओवर वर्ल्ड वो पोयम फेमस हुआ, उनके पहचाना गया उनके जो एफर्ट को, उनके राइटिंग स्टाइल को, फिर उन्हें ब्रिटिशर्स ने नोबेल प्राइज दिया था 1913. आप देखोगे चिल्ड्रन, दिस वाज द ईयर, दिस वाज द डेकेड व्हेन ब्रिटिश वर रूलिंग इन इंडिया. वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स. सो अभी तब के जमाने का पोयम है. सो यू मस्ट बी नो इनकी तभी जो सिचुएशन था इस पोयम में, उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशन को, सोशल कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है. So here in the last paragraph, a brief information about the given. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. So in this poem, children, टैगोर ने अपील किया है टू गॉड से अपील करे. मीन्स दिस पोएम इज अ कॉन्वर्सेशन, नॉट फुल्ली कॉन्वर्सेशन टाइप ऑफ पोएम, बट ही इज प्रेयर कर रहे हैं वो गॉड से. ही इज प्रेइंग फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, ब्रिटिशर्स से पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए. देन ऑल्सो अबाउट सोशल, अबाउट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about this poem. So I hope till now you have understood. Thank you so much for attending today's class. Have a nice day, children.